political science. We are left with political science, one chapter outcomes of democracy, and two chapters in geography, and then I think one chapter globalization. We are left in eco. So we will be completing them quickly. Ma'am, now which chapter we are doing? Outcomes of democracy. Now, before I start this chapter with the book, I just want to give you what is this chapter about. अभी हम लोगों ने 9th standard में, now I am going back to 9th standard. 9th standard we started with the concept that democracy. Why democracy? Like even your book's name, the name of the book is also democratic politics. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है. इन 9th standard we had studied about why do we need democracy, what are the positive and negative effects of democracy. Then in the democracy, what are the key elements, like electoral politics is there, then constitution was built up, so how it was designed. These were some of the, and then how does the institution, or how do the institutions in democracy work. Then we moved on to 10th standard, जहां हमने इसको और आगे लेकर आए कि वहां हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर the three horizontal, that is legislative, executive and judiciary. यहाँ हमने पढ़ा power sharing among these, and then the federal type of government. मतलब ये सब हम डेमोक्रेसी के अंदर जो है we are practicing. These are the things that we practice. The next was, in a democracy we also have one thing what we call as political parties. Without, means in our country if we look, so the political parties have evolved over a time. Not that starting में हमारे पास इतने सारे political parties थे, ऐसा नहीं है. We have a long history कि कैसे Indian National Congress had split into two, then two से three, three से four, and now we are having a multi-party system. तो अब ये जितना हमने पढ़ा है, right from 9th standard till 10th standard, there are some chapters which I think we have left out in 10th standard, which should have been. We had one chapter, second chapter, which says that in democracy, the citizens are democratic. They have the rights. Nobody can discriminate us on the basis of our color or race or gender or religion. But yet, these things are there, prevalent है. जैसे हमारे यहाँ पर the differences between boy and girl बहुत ज़्यादा रहता है. That's a very common, I don't know what is the scenario right now in everyone's family, but yes, I have seen that in my family also. With God's grace, in our family we are not having those kinds of taboo, but yes, this is there. तो जो हमने second chapter छोड़ दिया था, which has been deleted, that came up with this कि respect is given to various places. अब ये जो चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें बताता है जो हमने पढ़ा है अभी तक, मतलब राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टिल हियर, कि व्हाट आर द आउटकम्स. हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है. हमने ये सब कुछ पढ़ा है. अब हम पढ़ना चाहते हैं, नाउ वी वांट टू सी, हम इसका मैथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं. वी आर कैलकुलेटिंग द आउटकम.
जैसे आप लोग अपने थियोरम्स में या अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में यू कैलकुलेट कि इफ अगर हम पॉलिटिकली देखें, मतलब हम लोग इंसान हैं लिविंग इन अ कंट्री, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है, हमारे ऊपर सोशल प्रेशर भी है, हमारे ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर भी है। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिटिक्स, जो कल बजट आया था या फिर हम अपने हाउ डू वी लिव, हम अपना खर्चा पानी कैसे करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, एंड द फैक्टर्स विच इफेक्ट अस, दैट इज सोशल। तो पॉलिटिकली डेमोक्रेसी पॉजिटिव है या नेगेटिव, इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी पॉजिटिव है या नेगेटिव, सोशली डेमोक्रेसी पॉजिटिव है या नेगेटिव, we want to see that, and that is the chapter outcomes of democracy। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस है सीधे सीधे मोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिस्कस द, मतलब क्वेश्चन को मैं स्ट्रेट बता रही हूँ, इवन इफ इट कम्स इन द ट्रिकी फॉर्म ऑल्सो। why democracy, मतलब what is the difference between democratic and non-democratic government, then how can you say that democracy produces an accountable responsible government, that is political outcome, then economic outcome में how it is bit lagging, then how can you ensure democracy produces social dignity। मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था दैट वी हैड मिस्ड वन चैप्टर डिलीटेड, वो आपका यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन है। सो दैट इज द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ सबसे पहले लेट अस कम, वी ऑलरेडी नो इन द नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स, जो नॉन डेमोक्रेसी होती है लाइक मिलिट्री और डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी और मोनार्की, उसमें और हम में क्या फर्क है, वे देयर सिटीजंस हैव नो रोल, दे डोंट हैव एनी रोल, दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस, दे डोंट हैव एनी पावर इन द डिसीजन मेकिंग। तो इफ वी लुक इनटू दैट, सबसे पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन नॉन डेमोक्रेसी, बिकॉज इन डेमोक्रेसी, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पहला चैप्टर, इन डेमोक्रेसी वी हैव वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, इक्वालिटी, it promotes equality, all are equal in front of law, whether you belong to the richer class, whether you are the prime minister or you are a general man, if you are produced before the law, the method of law is same for everyone, enhances the dignity of individual। in non democracy there is no word called dignity, बट यहाँ आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, राइट्स ऑफ इक्वालिटी, right to approach court, certain fundamental rights have been given to you, nobody can snatch those rights, so you can live with dignity, you can practice whatever work you want to, improves the quality of decision making, each and every person who is 18 years and above has the right to vote. So with our participation, maximum participation, we can improve the quality of decision making. We can participate in the government.
अगर हमें लगता है ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है तो देन वी हैव टू स्टैंड अप. इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इलेक्टोरल कंपटीशन. देयर आर मेनी मेथड्स थ्रू विच हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, allows room to correct mistakes. इस बार अगर गवर्नमेंट इज नॉट working in favor of the people, then next time the vote will not be given, and that is how they can correct their mistakes. लेकिन अगर आप देखो, when we talk to people around us, most of them support democracy than monarchy, military or religious leaders. And why? These are the reasons. Now over 100 countries, पहले क्या था हमारे, that particular chapter in 12th 9th standard is omitted, but if you look 1900 से 1950 के बीच में most of the countries started following democratic institutions. So they have the formal constitutions, they have the elections, they have the party system, they have certain fundamental rights. While these features are common to most of them, but हर एक जगह पर अलग अलग है. इफ यू गो टू फ्रांस, वहां डेमोक्रेसी का मीनिंग कुछ और होगा. मतलब मीनिंग ये, बाकी सारी चीजें सेम है. दे हैव द राइट, दे गो फॉर द इलेक्शंस, लेकिन उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. India is democratic, UK is democratic, US is democratic, but the way they live is different. That is because of the social and economical environment. For example, in India, a person who is owning Lamborghini or say Audi, people will be looking at him like this, oh my god. In France or any European country, these are used as cabs. हमारे यहाँ जो ओला होता है, वहां पर आपका जो है BMW, Mercedes, these are used as cabs. That is the difference. मैम बट वो तो यहाँ पर भी आती है. हाँ बेटा, मैम वो तो यहाँ पर भी आती है लेकिन ओला cabs, नहीं. cabs are Yes, not ma'am. here. You don't have Mercedes as cabs. मैम आती है. No, that's not a Mercedes. वो आता है only for the chauffeur driven, only for the 5 stars, not for the common people. अगर आप अभी अपने घर के बाहर ओला बुलाओगे तो that would be, वो आपका पुराने जमाने का कोई वो स्विफ्ट का जो पुराना मॉडल होगा, that would come. मैम उधर लग्जरी भी ऑप्शन आती है. No, that difference is economic situations, beta. That we cannot, we cannot say that it's, that's a situation. हो सकता है कि 10 years down the lane we also have the same kind, but that is how democracy, मतलब what they want to say is democracy का जो system होता है बेसिक सबका सेम होता है, लेकिन हम उसे कितना लागू कर रहे हैं, that will depend upon the people's participation and many more factors. So clearly what may be achieved or not achieved under each democracy will be different. Our interest and fascination for democracy often pushes us into taking a position. हमें लगता है, मतलब ये देखो ये जो फोटो बनी हुई है, no doubt now the picture is not, photo is not going to come, but एक general है that democracy can address all the socio-economic and political problems. हम मानते हैं. And when it is not met तो हम ब्लेम करते हैं. हमें लगता है कि यार हम तो बेकार के देश में रह रहे हैं, इससे तो अच्छा हिटलर वाला था. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड
The citizens have to take advantage of those conditions and achieve their goals. So first of all, we have to understand कि what are the outcomes. ये जो क्वेश्चन है, this can come in two ways. पूरा भी आ सकता है, how does democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? और समटाइम्स ओनली वन पोर्शन, अभी मैं बताऊंगी कौन सी वाली लाइन आती है, ओनली वन पोर्शन कैन ऑल्सो कम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग? और ये जो लिखा हुआ ना, इफ यू हैव द पेन एंड इफ यू आर यूजिंग योर इफ यू आर मेकिंग नोट्स और यूजिंग योर पेन फिजिकल बुक, ये है आपका पॉलिटिकल आउटकम. इट इज इन अनदर वर्ड द पॉलिटिकल आउटकम. Accountable, responsive and legitimate. Now let us come to the definition. एक एक का definition पूछते हैं कि what is the meaning of all of them. Accountable means जो भी government करता है, whatever step it is taking, it is accountable to the people. How? We have some mechanism. हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं, वो चाहे हम यूज करते या नहीं करते वो एक अलग बात है, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस सर्टेन राइट्स. हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं. सेकेंडली, जो इलेक्शन है, दैट इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म. अगर वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, इफ इट इज नॉट आंसरिंग, देन नेक्स्ट टाइम दे वोंट गिव द वोट्स. कंट्री इन समझिए. हेलो 90 Second is responsive. We have many demands. हमारे पास बहुत सारे डिमांड्स होते हैं. लाइक वी वॉन्ट दिस थिंग, वी वॉन्ट दैट थिंग. अभी जैसे कल बजट आया, तो many people were not happy. Now they have asked the government. नीट की काउंसलिंग हो रही है. those students who are appeared for NEET and want to get into medical college, वहां पर there are some problems. The NEET counseling was postponed. So the students had written through the Twitter handles, आप लोगों का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है. There are many students, parents, organizations, teachers, those who have written to the government demanding immediate results, demanding immediate date sheets. And एक government जो होता है, it has to hear to all those issues. They have to see what the people are demanding. और अगर वो एक नहीं, एक बहुत बड़े सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस बहुत सारे लोग एक साथ एक ही चीज को पूछ रहे हैं, देन द गवर्नमेंट हैज टू हियर इट. वो छोड़ नहीं सकते हैं. आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ लास्ट ईयर. 2 years ड्यूरिंग द पैंडेमिक, देयर वाज मतलब कि स्कूल्स तो बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, यूनिवर्सिटीज वर क्लोज्ड. लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, अब उनको नेक्स्ट ईयर जाना ही है. अब आप लोग 9th से 10th में आ गए, 10th से 11th में भी आ जाओगे. लेकिन अगर आप सोचो कि आपका रिजल्ट ही नहीं आया, आप 10th से 10th में ही बैठे हुए हो, और 10th में ही बैठे हो और 2 साल से बैठे हुए हो, हाउ यू विल फील? आपकी तो पूरी की पूरी एक ईयर खराब हो गया. क्यों? क्योंकि अगर आपको 2 साल बाद रिजल्ट मिला, जब आप 17 साल के थे तब आपने जो है जाकर 11th किया, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपका एक एज लिमिट होता है. तो जब तक आप पढ़ के बाहर आओगे तब तक तो एज लिमिट खत्म ही हो जाएगा.
The same problem was with the with many of the IITs, many of the people who are not getting the admissions. Everyone took it to the government. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला, एंड जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली दे टुक द स्टेप. द गवर्नमेंट को बोला रिस्पॉन्ड टू देयर प्रॉब्लम्स. नाउ जो भी प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट हैड टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं. ये तो मैंने एक छोटा सा एजुकेशन से रिलेटेड बताया था. इन एवरी स्फीयर देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड. एंड लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, लीगल. लेकिन हमारे यहां पर लेजिटिमेट का मतलब क्या है? मीन्स इसको हम एक प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू हम लोग जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. अब मिलिट्री में ऐसा नहीं होता है. मिलिट्री में कोई लॉ नहीं है. वहां पर तो सीधा कब्जा किया एंड स्टार्टेड, जैसे भी तालिबान में हुआ. इट इज नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इट इज नॉट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. In Pakistan, twice military had overtaken. That's not a legitimate government. Because it was not formed with a proper mechanism. It was not formed with a proper method. और इसीलिए हम इसको legitimate कहते हैं. So now let us come. How does it produce a accountable, responsive and legitimate? There are some things that democracy must provide. In a democracy, we are concerned with ensuring people will have the right to choose their rulers and also control on them. And whenever possible, we should be able to participate. ये हमारा आता है पॉपुलर स्ट्रगल वाला चैप्टर, जिसमें हमने अलग अलग पढ़ा था हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. Before we go to this question, we face another common. Is a democratic government efficient? Is it effective? Now, what is the meaning of efficient? What is the meaning of effective? Effective का मतलब होता है टाइम से काम करना. Effective का मतलब होता है टाइम से काम करना. And efficient का मतलब होता है काम को सही ढंग से करना. इफेक्टिव का मीनिंग होता है टाइम से करना, whereas efficient का मतलब होता है with proper quality. So it is, some people think that democracy produces less effective government. Why? It is not, of course, true that non-democratic do not have to bother about deliberations in assemblies or worries about majority and public opinions. They can be very quick and efficient in decision making and implementation. क्योंकि वहां पर they don't need to go for a complete procedure. हमारे यहाँ अगर हम एक बिल पेश करते हैं, first of all that bill will be deliberated in the Lok Sabha. It would be debated. So it takes time to implement these. Whereas in non-democratic, it is okay. किसी ने पूछना थोड़ी है, जो उनको सही लगा उन्होंने कर दिया. So that is why there the delay doesn't take place. Like when Hitler became the leader in Germany, he implemented all the economic reforms जो उसको सही लगा, because he did not need to take advice from his council of ministers. He did not require to table it in Lok Sabha or Rajya Sabha. But हमारे यहाँ वो करना होता है. मतलब in democracy we have to do it. Why? Because in democracy the government is of the people. तो जो representatives आपके पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपको उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा.
The leader cannot make any decision on his own. That is why the delay takes place. Now second is efficient. पहला हमने पढ़ा effective, अब हम पढ़ रहे हैं efficient. So why it is efficient or not efficient? Imagine a government that may take decisions very fast, but it may take decisions that are not accepted by people and face problems. In democracy, the government takes more time to follow procedure, so the decisions will be accepted and more effective. So the cost of time the democracy pays is perhaps worth it. उनका मानना है that it ensures efficiency and effectiveness. Yes, effective कम है because time से काम नहीं होता. आपको पता है in our judiciary वो एक बहुत famous dialogue है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख. And the reason is each and every portion has to be analyzed. Now, democracy ensures that the decision will be based on norms and procedure. Norms and procedure मतलब सारे procedures को हमें लेना पड़ता है. For example, हमारे यहाँ पर एक we have one right which is called as RTI. Which is called as RTI. और ये जो RTI है, that is right to information. This is really very magical. Why? Because अगर मान लो government has taken some decision and you as a citizen want to find out whether जो उन्होंने decision लिया है, जो वो पैसा खर्च करने के लिए कह रहे हैं, whether this is right or wrong, तो you can use that right and you can find out. The government has to follow what we call as transparency. The government has to follow transparency. Transparency मतलब जो वो करते हैं that has to be clearly told. जैसे कल आपका जो है जब बजट पेश हुआ था तो you could have seen whatever खर्चा वो लोग करते हैं, whatever decisions they take, everything has to be written, recorded. Therefore, when we try to find out, democracy produces a government that follows procedure and is accountable. जैसे मैंने आपको बताया that if we look into RTI, right to information, then you will see that and people use it. People use it. वो पूछते हैं ये वाला मतलब कि डिसीजन क्यों लिया गया. They go to the court, they try to find out with the rules. RTI मेरे मतलब कि हमारे स्कूल के अंदर ही ये हुआ था. This was one mechanism that हमारे मतलब in schools what happens is that they charge you for 100 things. कभी कहते हैं बिल्डिंग फंड है, डेवलपमेंटल फंड है, देन मल्टीमीडिया फंड है, कंप्यूटर फी है. तो देयर वाज वन हमारे यहाँ पर एक पेरेंट थे, ही वाज अ लॉयर. तो ही अप्रोच्ड कोर्ट, उन्होंने आरटीआई डाला एंड ही सेड ये दो अलग अलग मल्टीमीडिया फीस एंड कंप्यूटर फीस क्यों लिया जा रहा है. एंड अगर आप मल्टीमीडिया कहते हो तो हमारे बच्चों को आप क्या देते हो. So we have some rights and these rights can be used everywhere. हर जगह आप यूज कर सकते हो कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं तो इसका हम लोग मतलब कि where it is used, हमने जो ये टैक्स दिया तो where it is used, the government is accountable.
Whereas in non-democratic, these things are not there. If you wanted to measure democracy on the basis of expected outcome, you would look for the following practices and institutions. ये मैं अभी जो बता रही हूँ अब आएगा आपके. Open, regular, free and fair elections. Open public debate on major policies and legislations and citizens. Right to information, जो मैंने अभी आपको समझाया, अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. ये हमारे पास वो हथियार हैं जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट के पॉलिटिकल आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं. द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोड अ मिक्स्ड रिकॉर्ड. येट democracies have had greater success in setting up regular and free elections. Open public debates. हमारे यहाँ पर इन इंडिया पब्लिक डिबेट्स थोड़े कम रहते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं है. इफ़ यू गो टू mygovern.in तो उसके अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशंस. आप मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हो. आपका जो परीक्षा पे चर्चा है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिक डिबेट. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and subjecting every decision to public debate. ये एक माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि इन डेमोक्रेसीज नॉर्मली व्हाट वी डू इज हम लोग क्या करते हैं, माल प्रैक्टिसेस. Secondly, democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. But yet they are much better than non-democratic regime in these respects. क्योंकि if I tell you, मैंने अब आपको बताया, I don't know how many of you are aware of RTIs. मतलब मानो एक जगह पे हम 100 जनों से बात करते हैं तो only 10% knows about that. Only 10% people know that there is one word called RTI. And we should use it when we feel that the government is not working properly. There are people जो use करते हैं. And I'm not talking about the one who are educated. I'm talking about even the farmers, the uneducated, illiterate people, they also use it. But you must be aware. In substantive terms, it may be reasonable to say that to expect from democracy that government that is attentive to the, ये second वाला है, accountable. पहला हमने जो पढ़ा था आपका वो था आपका responsive and accountable. हमने पढ़ा अभी तक accountable, अब हम पढ़ेंगे responsive. The second one, this is responsive and the third one is legitimate. ये तीन अलग अलग हैं. In substantive terms, it may be reasonable to expect from a democracy that government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. For example, what right now every person is expecting. Everyone is expecting that the government should look into small traders. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे स्कूल्स बंद हो गए थे तो many of the people, many of the parents, they had written मतलब उन्होंने PIL डाला है that the schools should be opened. तो ऐसे कई डिमांड्स होते हैं. कुछ जगहों पे people want the corruption should not be there. The record of democracy is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of people and often ignore the demands of a majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince. मतलब आप रोज ही देख सकते हो कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा किया, वहां पर ऐसा हुआ, और हम लोग रोजमर्रा में भी देखते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस हैज द audacity to go to the courts? How many of us have this courage? गलत हर जगह होता है, हमारे सामने के सामने होता है, बट
वी नो ये गलत हो रहा है, बट वी डोंट हैव एनीथिंग. At the same time, there is nothing to show that non-democracy are less corrupt or more sensitive. ऐसा भी नहीं है. मतलब अगर हम देखें तो हम ये नहीं बोल सकते कि नॉन डेमोक्रेसी में दे आर मतलब कि दे आर मोर रिस्पॉन्सिव. वहां पर भी नहीं सुनते. यहां पर वी हैव द ऑप्शंस, बट वहां तो ऑप्शंस भी नहीं होते. देयर इज वन रेस्पेक्ट in which democracy government is certainly better than its alternative, and that it is legitimate. What is the meaning of legitimate? As I said, means through a proper mechanism. मिलिट्री में ओवरथ्रो किया, क्योंकि हमारे यहां पर मिलिट्री इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ ऑल दीज थ्री. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में मिलिट्री एक अलग रेजिम होता है. तो मिलिट्री ओवरथ्रो करके it becomes like in Pakistan, in Bangladesh it happened, in Pakistan twice it happened. In monarchy you don't have anything. वहां तो कोई सिस्टम ही नहीं होता. राजा बहुत अच्छा हो सकता है, उसका बेटा ना हो. You cannot. But when it comes to democracy, it has been formed with the consent of people, and that is why it is called as legitimate. But a democratic, sorry, it may be slow, less efficient, not always very responsible, but democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracies all over the world. As accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regimes as well as without democratic. People wish to be ruled by representatives elected by them. They believe it is suitable. Democracy's ability to generate its own support itself an outcome that cannot be ignored. जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी बाहर के ऐसे कंट्री को देखो, जैसे नेपाल को देखो. वहां पर पहले आपका मोनार्की था. देन दे हैड अ प्रॉपर, मतलब वहां पर जो है दे हैड दी प्रॉब्लम्स, वायलेंस था. उसके बाद डेमोक्रेसी सेटअप हुआ था. इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ट्वाइस दे हैव फेस द मिलिट्री रेजिम्स. बट हमारे यहाँ पर ऐसा कहाँ है? हमारे यहाँ पर देर इज अ प्रॉपर डेमोक्रेसी बिकॉज वी आर ऑल. नाउ कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये एक ऐसा रेजिम है, मतलब इफ आई से पॉलिटिक्स, इफ आई से सोशल, तो डेमोक्रेसी इज बेटर. बट व्हेन वी लुक इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ, it is slightly lagging in economic growth. What is the meaning of that? Means अगर हम economic development को देखते हैं, as I gave you the example of Hitler, Germany was under debt. जब वॉर हुआ तो जर्मनी जो है वो कर्जे के नीचे दुखा मतलब था. लेकिन later on it became one of the most developed country. How? उसने अपने इकोनॉमिक जो हाजमर था, his economic minister, he used the brain and जितनी जल्दी वो डिसीजन ले सकता लिया, एंड जो इकोनॉमिक लैगिंग उनकी कंट्री में था उसको उसने ठीक किया. A country which was under debt became one of the wealthiest country in the world because the decisions could be easily taken. But हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है
कि we have to go through all the formalities, the procedures, मतलब in the democracy. तो वहां पर किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग जाता है. तो डेमोक्रेसी हैज नॉट अचीव्ड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि और में हुआ है, स्पेसिफिकली इन मिलिट्री. If democracies are expected to produce good government, then is it not fair to expect that it will also produce development? Evidence shows that no practice in many democracies did not fulfill these expectations. If you consider all democracies and all dictatorships for 50 years between 50 to 2000, आप देखोगे जहां डिक्टेटरशिप रहा है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रहा. The inability of democracy to achieve higher economic democracy development worries us. But ये एक रीजन से हम इसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं. Then economic development जो है that depends on many factors like country's population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by country. ये वाला जो factor है, this I can correlate with Pakistan, Bangladesh. वहां पर अगर आप देखो तो इकोनॉमिक मतलब वाई दे आर इकोनॉमिकली, तो अगर आप देखोगे तो साइज, सिचुएशन, कॉपरेशन ये बहुत मायने रखता है. However, the differences in rate of economic development between less developed and dictatorship and democracy is negligible. Point कुछ percentage अभी दिखाऊंगी मैं. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect not to lag behind the dictatorship in this respect. ये देखो ये जो बना हुआ है, this tells कि इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी में बहुत ही पुअर है. जो रिच है वो रिच होता जा रहा है, जो मिडिल है वो पिसता जा रहा है, पुअर बिल्कुल फंस गया है. एंड ये वाली जो मैंने बताया था ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम्स, ये जो टेबल नंबर 1 3.95, ऑल डिक्टेटर 4.42, यानी कि कितना है 0.50 जो है वो हमसे मतलब वो बड़ा है. पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप 4.34 एंड पुअर कंट्री अंडर डेमोक्रेसी 4.28, यानी कि 0.7. दैट शोज कि डेमोक्रेसी में जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा पीछे है. So many people argue that the economic outcome of democracy is not good. See, arguments about democracy tend to be very passionate. This is how it should be. Democracy appeals to some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. अगर हम देखते हैं तो over the year many students of democracy have gathered careful evidence to see that in democracy the development is bit low. ये देखो यहाँ पे एक जो बना हुआ है, माई गुडनेस लिटिल फेला हाउ फार डिड यू फील. तो वो कहता है कि हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर ये बड़ा है, बाकी चीजें है ही नहीं. एंड दिस इज वेरी मतलब कि वेरी कॉमन हमारे यहाँ पर भी है. एंड दिस प्रॉब्लम जो है वो आता है इन एवरी कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है वहां पर थोड़ा सा इकोनॉमिक, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज कि वो कितना इनकम इनइक्वालिटीज को दे वांट टू टेक अप, हाउ मच दे वांट टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द पुअर एंड द मिडिल क्लास. If they are able to do, the democracy is also better. This is we are going to do till we have done till today. That is, democracy produces an accountable, responsive, and it is a legitimate government. And then the economic outcome of democracy is slightly lagging.
like 4.95 and 3.94 and 4.42. Whereas if we look into accountable, yes, it is accountable. Or else accountable कैसे है? We have free and fair elections. Is it responsive? Then is it legitimate? In our next class, that is, we will be completing it. We will be reading how does democracy produce dignity to the people, how it ensures social equality, specifically to the underprivileged, to the people who belong to certain sectors, or and women. और ये आपका अलग अलग आएगा, जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा ही ये मतलब आता है. With this chapter will be completed, right?